Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 27th July, that is Thursday, and we are here with the Hindu analysis of 27th July. So if I'm audible and visible, just write in the comments, yes sir, you're audible. अगर मेरी आवाज आ रही है आप एक बार लिख दो, yes sir, you're audible. So these are the two important articles. The first is related with no trust motion, or you can say no confidence motion. We discussed it in earlier yesterday classes and all about this. So I hope you are aware of this. I'll be asking questions from here. Then here this is actually citing FATF, Center urges Supreme Court to let Mr. Mishra continue as Enforcement Directorate Chief. So these are the two important articles we will be discussing today. Yes, good morning guys, good morning everyone. No trust motion against PM Modi government admitted in LS Lok Sabha. ठीक है, so मैंने बताया है, काफी कुछ बता भी दिया already. No confidence motion and all. So let's have some question with this topic. ठीक है, so कुछ सवाल हो जाए. अगर आपको if you are interested to know more about no confidence motion, please go and watch yesterday's class, that is 26 जुलाई का जो क्लास है, इसको आप देख लेना. You will get to know more about this no confidence motion in detail. I have already discussed it. It is coming in the news, and that is why it becomes important for you that you should be knowing about no confidence motion. Okay, yes. So admitting the motion, Mr. Birla informed the Lok Sabha that he would schedule a debate after consulting leaders of all the parties. When the Lok Sabha reconvened at noon after a brief disruption during question hour, the speaker informed House that he received a notice and all in this regard. Okay, so there's a question for you in this article. This is mentioned, इसीलिए मैं यहाँ से question उठा रहा हूँ. Who among the following moved the no confidence motion in the Lok Sabha? Your options are Mr. Kapil Sibal, Mr. Rahul Gandhi, Mr. 𝗟𝗲𝗴𝗏 𝗥𝗲𝗀, Mr. Shashi Tharoor. Your time starts now. इनमें से कौन से लोकसभा एमपी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है? सो कोई एक एमपी मूव करते हैं ना, एंड इट इज साइंड बाय अदर एमपीज एंड ऑल. So you have to tell me what is the name of that Lok Sabha MP who have actually initiated or moved the no confidence motion. If you have read today's first page of the Hindu newspaper, you can easily answer it. Yes, very good. Anamika Kumar, Sania Ansari, Manu, Dhananjay, Nitika, Priya, Manya. Yes, you are right. Mr. 𝗟𝗲𝗴𝗏 𝗥𝗲𝗀, he is from which state? Can anyone tell me he comes from which state? तो अगर आप देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, when the Lok Sabha reconvened at noon after a brief disruption during question hour, the speaker informed that he received a notice from Mr. 𝗥𝗲𝗀 expressing a want of confidence in Council of Ministers under Rule 198. And the Assam MP actually is from Assam. Okay, seek to permission of the House to move the motion. Mr. Birla take a head count of members backing it. It is mandatory to have 50 MPs and all. Okay, yes. So the right answer is C, Mr. 𝗟𝗏𝗏 and he is actually the son of, the former chief minister as well. So 𝗟𝗏𝗏 on no trust motion, it has gone beyond numbers. It is about preserving northeast territorial integrity. That is what he said. And his father actually, Mr. Tarun Gogoi, was the chief minister of Assam. If you see, he was the Assam chief minister from 2001 to 2016. And I think one or two years back, his father actually died also. So just have an idea. His father was the former chief minister of Assam. Okay, yes, very good, Gauri. A lot of people write Sania Ansari, good. Okay, so just have an idea about it. Now, there's a question for you. What is correct about no confidence motion? Actually, correct hai isko. Your options are, the first is it is mentioned in the Constitution of India. The second is it requires the leaves of the House. The third is it can be initiated in either House of the Parliament. Fourth is all of the above is correct. Your time starts now. बताइए. What is the right answer? Correct statement about no confidence motion. ये सब पढ़ाया हुआ है. In fact, आज के The Hindu के first page में था, and I had taught it in the previous classes also. So I am expecting you all to know this. अच्छा, you got confused. ठीक है. Article 75 clause 3. नहीं, Gauri, yes. देखो, it is mentioned in Constitution. This will be a wrong statement. मैं बता दे रहा हूँ, clarify कर दे रहा हूँ क्यों.
Okay, it requires the leave of the house. This is a correct statement. It can be initiated in either of the house. This is also a wrong statement. Okay, so the right answer is option B. I will explain. Article 75 clause 3, which you are just saying to justify option A, is not 100% correct. It says that Council of Minister shall be collectively responsible to Lok Sabha. Collectively responsible to Lok Sabha. ये बस लिखा हुआ है. Okay, it is true that the idea of no confidence motion comes from here only, but directly it is not mentioned in Constitution. So no confidence motion is not mentioned in Constitution. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. And in fact, I told you, मैंने ये वाला रूल भी दिखाया था. Rule of procedure and conduct of business in लोक सभा मैंने बताया था 198 रूल. Yes. अगर आप आज की आर्टिकल ही पढ़ोगे, लेट मी शो यू हियर. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो. The expressing a want of confidence in the Council of Ministers under Rule 198, and you need the mandatory backing of at least 50 MPs. इसी को लीव ऑफ हाउस कहते हैं. लीव ऑफ द हाउस. एक्चुअली सब टेक्निकल टर्म है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं. लीव ऑफ द हाउस क्या मतलब होता है? It means the permission of the house. So 50 MPs should sign it. लोक सभा MPs. Yes? हाँ. Okay. तो इसीलिए ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि it is mentioned. ये mention नहीं है. It has actually a root in the Article 75 clause 3, but it is not mentioned in Constitution. It requires leave of the house for 50 Lok Sabha MPs. Yes, ये permission of the house कहते हैं, लेकिन technical term leave of the house लिखते हैं. It can be initiated in either house. Again नहीं. मैंने आपको कई बार बताया है, सरकार बनती गिरती सब कुछ लोकसभा में होता है. I have taught in the paid classes the concept of legislative assembly, legislative council at state level, Lok Sabha and Raj Sabha at union level. मैंने बताया है. And I have told you that all the government formation, all the government no confidence motion, सब सरकार बनती टूटती सब जो लोक सभा में होता है. Yes, so either house नहीं होगा. It can be only in लोक सभा. ठीक है ना? Yes. So yes, the right answer here is 2 is the right answer. मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया था. I know कि सब ऑप्शन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाओगे. So that is for clarity purpose. I had given this news. ठीक है, ये important है थोड़ा. ये सब leave of the house and all no confidence motion. Star market. Okay. Yes. Okay. Let's move on further. ये आप conduct of rules of 198 को थोड़ा सा पढ़ लेना. After the class is over. देखो इसमें नीचे जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ भी है ना. Less than 50 members should है ना. देखो लिखा favor of leave being granted to rise in the place. इसी को कहते हैं leave of the house. अभी ऐसा leave of the house से ना लोग डर जाते हैं. leave of the house का मतलब क्या हुआ? छोड़ के जाना नहीं. leave मतलब यहाँ पे permission of the house है. ठीक है. That 50 MPs should sign it, then only the no confidence motion will be initiated. ठीक है, जब 50 लोग साइन करके देंगे तभी. ओके. यस. हाँ, ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. फर्स्ट पेज में एक और आर्टिकल थी. साइटिंग FATF सेंटर अर्जेस सुप्रीम कोर्ट टू लेट मिस्टर मिश्रा कंटिन्यू एज ED चीफ. अब इसके बैकग्राउंड में आपको ये समझना पड़ेगा. I think few days back, if you are watching my class for the past 15-20 days, you are aware of this. We had discussed it. That Supreme Court said that Enforcement Directorate Chief should quit. But the Supreme Court said कि 11 जुलाई को जजमेंट रहता है, 10-11 जुलाई को, and it said कि okay, we are not saying him to quit. Actually the Supreme Court gave some around 20 days that okay, smooth transfer of power should happen or smooth transition should happen. Okay. Yes. So 31st जुलाई तक टाइम दिया था Enforcement Directorate की चीफ को. His name is Mr. संजय कुमार मिश्रा. तो quit and all, है ना? Yes. But now recently the Supreme Center has again gone to the Supreme Court. मतलब it requested a sort of review petition type thing. है ना? इसको कहते हैं ना कि आप एक बार और consider कर लीजिए, है ना? Just Supreme Court let Mishra continue as ED chief. So the Supreme Court agreed to hear this matter, and it said that at this critical juncture, it is essential to have an individual well acquainted with the overall status of money laundering and all. See why actually the government has said कि FATF का कुछ रिव्यू वगैरह हो रहा है. ठीक है, FATF and the Financial Action Task Force. So ongoing evaluation of by FATF is being done and all. So that is why they need some permission that ED chief should continue and all. So these are some of the reasons. Let's see what the Supreme Court says. तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना? Now there's a question for you. Since we are talking about FATF, there's a question. It was established in the year 1987, 1989, 2002, 1971. What is the right answer to this question? बताइए. Everyone please press the like button and subscribe to our channel. Like button press कर दो, subscribe कर दो.
and share this video with your friends, है ना? Sharing knowledge increases knowledge. Yes, so सबको share कर दो. Yes. The right answer is option 2. Yes, Gauri, Zoya Khan, Manu, Dhananjay, Priya, Sani Ansari, Iram Sheikh. 1989 is the right answer to this question. आप देख सकते हो. And the question is, where is the headquarter of Financial Action Task Force? Your options are Paris, Washington DC, Berlin, Geneva. Financial Action Task Force. हाँ, एक चीज और ये है कि 29 जुलाई को 11 AM में 29 जुलाई को 11 AM में विल बी हैविंग ए मैराथन, तो ज्वाइन कीजिएगा इसी में, ठीक है? सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर दैट. देखो लिंक में भी बता दिए गए आपको कि 29 जुलाई को 11 बजे सुबह में विल बी हैविंग 29 जुलाई मतलब डे आफ्टर टुमारो, राइट, है ना, सैटरडे को. ओके, सो विल बी हैविंग ए मैराथन, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा. 5-6 आवर्स का मैराथन होगा, है ना. सो इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस. यस, ए इज द राइट आंसर. रश्मिकांत गागी, Iram, Priya, Seema, Gauri, you all right. A is the right answer. Paris is actually the capital of France. ये सब तो पता होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आप प्लीज जो है FATF अपने से थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है? सो G7 के द्वारा बनाया गया था एंड ऑल टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग. पेरिस में हेडक्वार्टर है. सो गो एंड रीड अबाउट इट. अक्सर FATF का 2 लिस्ट होता है, एक को ग्रे लिस्ट कहते हैं, ब्लैक लिस्ट कहते हैं. ये सब पढ़ लेना थोड़ा. Who is in the black list? Who is in the grey list? Which are the countries which have been recently added or removed in grey list, black list? So recent added या removed country होता है ना, उससे पूछते हैं एग्जाम में ना. So that is what you should be knowing it. Bill proposes birth record digitization. ये भी फर्स्ट पेज में आर्टिकल था. India has taken first step to generate digital birth certificate, which will be an encompassing, all-encompassing document that can be used for admission, education sector and all. मतलब क्या, जैसे if a child is born तो उसका जो है birth registration वहीं पर हो जाएगा और डिजिटलाइज हो जाएगा सारे रिकॉर्ड्स के लिए. देखो होता क्या है कई बार, जैसे अब तो कुछ हद तक ठीक भी है, बट यस अ लॉट ऑफ टाइम्स हैपन इज कि जैसा डेट ऑफ बर्थ है तो अलग अलग जगह अलग है. क्लास 10 के सर्टिफिकेट में कुछ और है, 12 के सर्टिफिकेट में कुछ और लिखा है, पासपोर्ट में कुछ और लिखा है, आधार कार्ड. सो समटाइम्स दीस थिंग्स डू हैपन. There are anomalies in the name, in the actually in passport something else is written, in Aadhaar something else is written, in class 10 marks something else is written. So it creates so much problem. The date of birth has to be very much crystal clear. अच्छा, पहले तो रिकॉर्ड भी नहीं होता था, कोई कुछ भी लिख देता था. So a lot of times people used to change their date of birth, reduce or increase. But now, I mean, once this thing will be done, I mean, everything will be done perfectly and all. This is की बात हो रही है ना. It said a centralized register would help in updating other database and all. मतलब एक database बन जाएगा सारा. All the proof is with the government and all, है ना. It proposes to collect Aadhaar number of parents and informants also. ठीक है. तो जैसे if a child is born, that parents have to also submit their Aadhaar for registration, digital birth certificate registration of the newborn child. ठीक है. तो इसमें अगर जैसे मान लीजिए सरोगेट चाइल्ड है या सिंगल पेरेंट है, तो इस सब के लिए भी there is a procedure. It facilitates registration procedure for them also. या अगर कोई adopted child है ना, so उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा. So all these things are actually incorporated here. That is what is being talked about. Intergovernmental means जो दो गवर्नमेंट के बीच का हो. कहाँ पे लिखा हुआ है intergovernmental? It means it between the two government. ठीक है. Okay. Yes. यहाँ FATF में लिखा होता है क्या इंटरगवर्नमेंटल? अच्छा, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल नेशंस आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस. इसी यही मतलब होता है इंटरगवर्नमेंट. जैसे यूनाइटेड नेशन इज आल्सो एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये सब मतलब होता है. ओके, द नेक्स्ट इज लोकसभा passes forest conservation amendment bill. तो forest conservation act is there 1980. So the government has passed forest conservation amendment bill. It means they are doing changes in this law. Forest conservation act में कुछ changes किया जा रहा है. ठीक है. So that is what it was in the news. But yes, there are a lot of, I mean, some people were actually criticizing it because it is violating 𝗟𝗂𝗴𝗏 case. 𝗟𝗂𝗴𝗏 case एक है सुप्रीम कोर्ट का. ठीक है. So go and read about it. Then there are also fears that large parcel of forest near the borders would no longer be protected. ठीक है. And in the bordering areas, तो criticism ये किया था कि जैसे bordering areas में है ना, so in the bordering areas actually the permission or environment clearance is not required. Environment clearance की जरूरत नहीं पड़ेगी. Okay. So let's say for example BRO is making roads, border aid organization make roads. So in those bordering areas the permission is not required. So the criticism people say it is it might hurt the environment.
but at the same time Minister of Environment has said this will enable soldiers to actually station in sub-zero temperature and all, means road construction strategic reasons कह सकते हो, so it would be helpful in strategic reasons and all. तो ये सब चीजें इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, just go and read about it, what are the things and all. ये वाला केस जो है ना टी एन गोदा वर्मन केस, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, so go and read about it and all. Okay, before moving on guys, this is our paid course. We are running in fact a crash course also, and course for 2025 has also started. अगर कोई next year के लिए attempt लेना चाहता है, so we are having a paid course for this also. 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, etc. is there. If you have any question, call on this number 9538895678 पे call कर सकते हो, और you can register a 3-day free trial भी access कर सकते हो, ठीक है. So the link is given in the description for this. Okay, let's start with editorials. तो हमने बताया ये दोनों राइटर के द्वारा लिखा था. These two are actually authorless, written by editors of the Hindu newspaper. ठीक है. So let's start with this one, shedding more light on debt dilemma. मतलब वो debt से related. देखो actually यहाँ पे he has used the word public debt. Public debt मतलब government के द्वारा लिया गया debt. ठीक है, government debt and all. So he is talking about this. The elevated levels of India's fiscal deficit and public debt have been a matter of concern for a long time. देखो यही है, fiscal deficit क्या होता है. मैंने आपको बताया है, जैसे मान लो fiscal deficit मान लो किसी कंट्री का 5% है, it means 5% of GDP is the loan that it has taken, है ना. तो ये fiscal deficit actually reflects the loan, ठीक है, loan amount. जैसे मान लो for example आपकी इनकम है 100 रुपया, है ना, and your expenditure is ₹120. ऐसे कैसे हो सकता है? How can this be possible? It means you must have taken 20 rupees loan. इसी को fiscal deficit हो गया आपका उस साल का, ठीक है, for that year. This will be the fiscal deficit like that. ठीक है, so basically it is related with if a fiscal deficit is very high, it means that we have taken a lot of loans, which is not generally considered as good. Even before COVID-19 pandemic, debt levels were among the highest in the developing world and emerging market economies and all. A pandemic pushed the envelope further and relative to GDP. Fiscal deficit in 2020-21 increased to 13.3%, aggregate public debt 89.6%. तो यही बता रहे हैं कि yes, even before the COVID, actually the public debt or कर्ज, the loan that we have taken was, I mean, in developing countries were quite high. The projection said that even without any serious disruption in the economy, the debt level is unlikely to return to pre-pandemic and all. So he's saying कि yes, now it is very difficult to believe that the developing countries will go back to the pre-pandemic level as far as debt is concerned. मतलब बहुत सारा कर्जा लिया वो आप समझ लो, इतना परसेंटेज नहीं याद रखना है. The debt dynamic equation states that when there is no primary deficit, fiscal deficit in the year excluding the past legacy interest, if the growth rate of a GDP exceeds the effective. देखो एक और concept होता है बताते हैं, primary deficit. That is what he is explaining. It is actually fiscal deficit minus net interest payment. पुराना ओल्ड कर्जा का जो पेमेंट लौटा रहे हो, ठीक है. सो अगर ये जीरो है तो सबसे अच्छा माना जाता है ये वाला नेट इंटरेस्ट पेमेंट जीरो, यानी अगर प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट के बराबर हो गया, इट इज कंसिडर्ड एज गुड. इट मींस वी आर नॉट पेइंग बैक द इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड लोन्स. अगर ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इट मींस वी आर एक्चुअली एक बड़ा हिस्सा जो फिस्कल डेफिसिट का है वो पुराने कर्ज चुकाने में चला जा रहा है, विच इज नॉट वेरी गुड. जिस कहा जाता है ना लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, तो समथिंग लाइक दैट हो जाएगा, समझ रहे हो ना. आपको पुराना लोन चुकाने के लिए किसी और से लोन लेना पड़ा है, so ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस शुड नॉट हैपन. सो दैट इज आई मीन प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस ओल्ड इंटरेस्ट पेमेंट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट है. तो ये वाला अगर जीरो है तो बहुत अच्छा माना जाता है. अगर प्राइमरी डेफिसिट इज नियर टू फिस्कल डेफिसिट, इट इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड. ठीक है, बस यही है, आप समझ रहे. एसएलआर वगैरह हमने पढ़ाया है, सीआरआर एसएलआर, हाँ, डेट ट्रैप और समथिंग लाइक. यस गौरी, हाँ. Now, since we are talking about fiscal deficit, FRBM Act बनाया गया था 2003 में, Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act. So, what is the ideal fiscal deficit according to that? 5%, 3%, 7%, 9%. FRBM Act के हिसाब से ideal fiscal deficit कितना है? सबको लाइक बटन प्रेस कर दे जाओ, एटलीस्ट 30 प्लस लाइक्स ले जाओ गाइस. यस, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू इंश्योर गुड क्वालिटी कंटेंट फॉर यू. यस, बताइए. आइडियल फिस्कल डेफिसिट एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से कितना होना चाहिए? हाँ, यस गौरी, प्रिया, चवन, धनंजय, सानिया, सारी मानो 3% होना चाहिए. ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एफआरबीएम एक्ट को, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट. आइडियली 3%, अभी तक तो अचीव नहीं हुआ है, बट यस.
मतलब बहुत ज्यादा होना अच्छा नहीं है. इफ इट इज वेरी हाई इट मींस वी आर लोन ओवरबर्डन, बहुत ज्यादा कर्जा है. थोड़ा सा इसलिए अलाउ किया गया बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन, सो लिटिल बिट ऑफ लोन टेकिंग कुड बी एक्चुअली जस्टिफाइड बाय द इकोनॉमिस्ट कि चलो ठीक है वी आर टेकिंग इट फॉर डेवलपमेंट पर्पस एंड ऑल, तो हल्का फुल्का चलेगा. बट इफ इट इज गोइंग वेरी हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड. देखो जैसे अगर आप यहाँ देखोगे इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा है, स्नैपशॉट है इकोनॉमिक सर्वे का दिस ईयर का, है ना. तो आप देखोगे 2022-23 में 6.4% इज फिस्कल डेफिसिट के आसपास. आइडियली कितना होना चाहिए? 3% होना चाहिए. अगर आप यहाँ भी देखोगे इवन इफ यू आर टॉकिंग प्री पैंडेमिक लेवल इट वाज 4.7%, तो 3% उस टाइम पर भी नहीं था. ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे पैंडेमिक वगैरह आया था तो और ज्यादा हो गया. अब देख रहे हो, आर यू सीइंग इट? परसेंटेज रटना नहीं है बट एक आइडिया होना चाहिए ना, जस्ट हैव एन आइडिया दैट. हाँ, सो इट गॉट इंक्रीज बिकॉज क्यों? अब देखो पैंडेमिक में व्हाई फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज? बिकॉज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज गवर्नमेंट का. व्हाई? हेल्थ में खर्चा बढ़ गया, ऑफ कोर्स बीमारियां होंगी, ये होंगी, दवा, मेडिसिन, वैक्सीन एंड ऑल. और रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा, बल्कि हो सकता है रेवेन्यू गिर भी गया हो मे बी. बिकॉज व्हाई? व्हेन द लॉकडाउन हैपेंड द बिजनेस वाज नॉट वर्किंग, सो द टैक्स कलेक्शन वुड हैव डिक्रीज्ड. ठीक है, ऐसे सोचो ना, तो अपने आप खर्चा बढ़ जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो अपने आप फिस्कल डेफिसिट और एक्सपैंड कर जाएगा. ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. आइडियली 3% होना चाहिए, है ना. अब देखो फॉरेन एक्सचेंज 563 था उस टाइम पर, अब तो बढ़ गया शायद $600 बिलियन के आसपास. बिकॉज ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लैट 2020 में, है ना. व्हाट इज द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया एंड ऑल, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है, ये सब बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जीडीपी जो इस साल का बताया था नेक्स्ट अप टू कमिंग फिस्कल ईयर का, यानी 2023-24 इन विच वी आर वुड बी समवेयर अराउंड 6 to 6.8% जीडीपी ग्रोथ होगा, ऐसा बता रहे हैं. ठीक है, ओके, है ना. फर्स्ट ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट पेमेंट कंस्टिट्यूट ओवर 5% एंड ऑल 25%, दिस मोर देन गवर्नमेंट हैज. हाँ, अब यही बता रहे हैं कि जो ओल्ड इंटरेस्ट पेमेंट है ये बहुत ज्यादा है ना. And 25% of revenue receipt which is more than the coupling of education and health. जितना एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करते हैं उससे ज्यादा हम पुराना कर्ज लौटा रहे हैं का इंटरेस्ट है. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट एंड ऑल. ठीक है, हाई लेवल ऑफ डेब्ट मेक इट डिफिकल्ट टू कैलिब्रेट काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी. तो वही बता रहे हैं कि क्या क्या नुकसान है, व्हाट आर द बैड और इल इफेक्ट्स ऑफ आई मीन द हाई डेट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल. ठीक है, CLR ये सब बता चुके हमने, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, these things I have taught in the paid classes. ठीक है, एक और चीज है उसको कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा. ओके, देखो होता क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. जैसे मान लीजिए बैंक के पास, इफ द बैंक हैज 100 रुपी टू लेंड टू पीपल, तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है आरबीआई ने कि 40% आपको, नहीं इसका 100 रुपी से 40% क्या होगा, 400 रुपी यू शुड 40 रुपी लोन you should give it to these sector only. इसको कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. ओके, इज इट क्लियर? मतलब जितना भी बैंक का पास पैसा है, whatever the amount the bank is with, which actually it is going to lend it, out of that 40% it is supposed to lend in this field only: agriculture, MSME, export credit, education, housing, social infrastructure. Why? Because this will ensure poverty alleviation. आप यहाँ पे कर्जा दोगे तो पॉवर्टी एलिविएशन होगा, है ना. और यू कैन से सोशल जस्टिस विल हैपन, ये सब वर्ड लिख सकते हो ना, ये सब बता सकते हो. एजुकेशन में देना लोन, इसीलिए देखते हो बहुत सारी बैंक्स जो है एजुकेशन लोन, बिकॉज वो PSL का पार्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का. सो यू मस्ट हैव सीन एक्चुअली दैट, जैसे आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन की एजुकेशन लोन इज गिवन, MSME के लिए लोन्स दिया जाता है, जैसे ना मुद्रा लोन्स इज देयर. फिर मैंने पढ़ा है स्वामित्व स्कीम, स्वनिधि स्कीम इज देयर एंड ऑल, है ना. So you should be knowing it. फिर हाउसिंग में होम लोन्स दिया जाता है, देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एग्रीकल्चर लोन्स आर देयर. सो दीज आर एक्चुअली द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एरियाज. ठीक है, okay, it is clear that the present fiscal environment, even achieving a consolidated debt to GDP ratio is would be unfeasible and all. So he's saying actually कि the present, मतलब ये थोड़ा सा criticize कर रहे हैं actually that we have to be more cautious as far as debt handling is concerned. बस इतना समझ लो कि बहुत ज्यादा, I mean we are, our debt is actually expanding, I mean which should not be happening. ये वो बताना चाह रहे हैं. ठीक है, the issue of critical importance therefore is of fiscal consolidation. Fiscal consolidation मतलब वही होता है कि reducing, controlling fiscal deficit effectively, है ना. So that is what actually it means. So fortunately after 6 years GST has stabilized and has shown high growth potential. So he's saying yes 2017 में आया था GST and now we are thinking that yes it will be giving us positive result and all, है ना.
That is what is being talked about. अब कुछ चीजें बता रहे, जैसे आपको पता होगा BSNL, I mean it's was criticized a lot that BSNL was not working fine, but still government gave a lot of money in that field. Okay, so that is what, I mean, perhaps he is not happy with this. I mean, the author is not happy with this and all. ठीक है, फिर ओल्ड पेंशन स्कीम, एक ये बड़ा काफी इशू में बना था, OPS वर्सेस NPS, एक जमाने में काफी न्यूज में था. तो इतना समझ लो, इतना डिटेल नहीं जाना. न्यू पेंशन स्कीम is beneficial for government. Old pension scheme में ना government burden, government expenditure would be high. इतना समझ लेना. ठीक है, तो ऐसे लिए कहा जाता है कि न्यू पेंशन स्कीम में मूव करना चाहिए. Why? Because if the government is moving to new pension scheme, the government expenditure will go down. तो सरकार का खर्चा कम हो जाएगा. ठीक है, हाँ, इसमें बहुत सारी चीज थी, लेकिन NPS एक्चुअली क्या होता है, OPS वर्सेस NPS, जो pensioners हैं, it is said, I mean that in old pension scheme pensioners get more benefited. ठीक है, ज्यादा फायदा होता है जो पेंशन विड्रॉ कर रहे हैं ओल्ड पीपल, बट NPS में गवर्नमेंट पर खर्चा कम होगा. इतना समझ लेना, बहुत डिटेल नहीं जाना है, बट यस. So yes, those who are actually favoring controlling fiscal deficit, they are favoring that yes, we should go for new pension scheme to control the government expenditure. ठीक है, इसी सब की बात हो रही है, आप समझ लेना. Yes, है ना. तो FRBM Act के रूल्स की बात किया उन्होंने, we have discussed it. Okay, so just have an idea about that. Let's talk about this one, and this one is actually talking about the actually PM must use Parliament as a forum to reassure the people of Manipur and all. So you should be knowing it. I hope you are aware of this. तो इसमें कुछ खास बताने का नहीं है, बट यही है कि actually the Congress party is demanding that PM should give a statement in Parliament about Manipur and all. So that is what is being talked about. I hope you are aware of this unfortunate incident, video going viral and all. तो आपको ये सब पता होगा, तो इसमें कुछ बहुत खास explain करने का नहीं है. So that is what, I mean, the author is saying कि it is legitimate that yes, the Prime Minister should be speaking on this matter and all. बस यही सब है. ठीक है, तो इसमें कुछ खास explain करने का नहीं है. ठीक है, ये आप पढ़ लेना अपने से. I mean, nothing special to explain. You are aware of these things. SEO is a success story that can get better. This has been written actually by, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लो, फिर we will talk about it, है ना. Who is the latest member of SCO, Shanghai Cooperation Organization? East Timor, Iraq, UAE, none of the above. What is the right answer to this question? क्या सही जवाब है? Latest member of SCO, Shanghai Cooperation Organization. साफ से लिख देते, Shanghai Cooperation Organization. ठीक है, yes, very good. कुछ लोग बी कर रहे हैं. देखो, some people got confused between Iraq and Iran. See, this is Iraq. I'm talking about Iran. SCO का जो मेंबर है ईरान है, बस N और Q का फर्क है. So do not get confused. ठीक है, ईस्ट तैमूर कौन से ग्रुप का मेंबर बना है अभी रिसेंटली? It has become a member of which of the following groupings? बताइए. हाँ, डी नन तो समझ गया कि ईरान हो गया. बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया. ये वाला बताइए. एक्चुअली द आंसर इज आसियान के 11th मेंबर बने. 11th मेंबर ऑफ आसियान वुड बी ईस्ट तिमोर एंड ईरान इज द 9th मेंबर ऑफ SCO. ये सब याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए. ठीक है, सो द ऑथर इज एक्चुअली चार्ज द अफेयर्स ऑफ द एम्बेसी ऑफ चाइना इन इंडिया. तो आप एक तरह समझ सकते हो कि शी इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एन एम्बेसडर. चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया कह सकते हो, या चाइनीज फॉरेन ऑफिशियल, वन ऑफ द सीनियर फॉरेन ऑफिशियल इन Chinese embassy to India. ठीक है, so she has written an article. Okay, so 4th July, India successfully hosted SCO meeting. I hope you are aware that yes, we did it. Online meeting happened and all. And witness another SCO moment. A New Delhi declaration was signed and about counter radicalization, exploring cooperation in digital transformation. And Iran joined as full member of SCO, and there is a memorandum for Belarus to join SCO. इसका भी proposal आया है. Okay. So that is what we should be knowing it. She's talking about SCO family and all. Okay, where is the headquarter of SCO? बताइए. बीजिंग, शंघाई, न्यू दिल्ली, ताशकंद. ये बताइए हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ये मैंने कई बार पढ़ाया, so I'm expecting you all to answer it. Yes, बीजिंग में, not शंघाई में. जैसा कि आपको पता होगा, I have told you many times that even if Shanghai word is mentioned, but the headquarters in Beijing. Yes, Gauri is right. Is the right answer to this question. Our world, our times and history are changing in ways never before. World is grappling with geopolitical tension and an economic slowdown, energy crisis, food shortage, etc.
तो ये बता रहे हैं कि ग्लोबल टेंशन है, कोविड हो गया, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, एनर्जी क्राइसिस, फूड शॉर्टेज। एनर्जी क्राइसिस मतलब वही एनर्जी क्या चीज में, पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम नेचुरल गैस, वही वो एनर्जी। सो देन द अदर चैलेंजेस लाइक फूड शॉर्टेज, हाँ आजकल फूड शॉर्टेज भी वॉर के बाद देखा गया, वी हैव सीन इट। क्लाइमेट चेंज ऑल्सो इज देयर, आई मीन दिस इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम नाउ डेज कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। मेजर रिस्क टू वर्ल्ड पीस एंड डेवलपमेंट आर पावर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक कोएर्जन, टेक्नोलॉजी डीकपलिंग एंड ऑल, ठीक है। तो रिस्क क्या है, वर्ल्ड पीस को थ्रेट है ना, ओके। सो डेवलपमेंट आर पावर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक कोएर्जन जोर जबरदस्ती करना, कोएर्जन मतलब फोर्सफुल है ना, टेक्नोलॉजी डीकपलिंग, आइडियोलॉजिकल कंटेस्ट, ये सब लिखा उन्होंने, ठीक है। SCO has been committed to becoming a community with a shared future for mankind and all, that is what she is talking about. इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं, बस ये बता रही कि क्या क्या है और SCO क्या क्या अल्टरनेट दे सकता है ना। मेंबर स्टेट्स हैव कैरीड आउट स्पिरिट ऑफ गुड नेबरहुड, फ्रेंडशिप एंड ऑल, सो दीस आर द थिंग्स being discussed. SCO has been a guardian of and contributor of regional peace, stability and prosperity. So she is saying that yes, with the help of SCO we can establish peace, stability and prosperity and a win-win cooperation and all. So that is what is being talked about, ठीक है। So going forward in an era, SCO members should strengthen strategic communication, deepen practical cooperation and all. So she is saying कि yes, we should strengthen our cooperation, improve our business, trade and all. ये सब की बात हो रही है ना। There are some external elements that are orchestrating a new Cold War and block confrontation. देखो Cold War आपको पता होगा 1945 से 91 के बीच हुआ between UK block, US block and USSR, है ना। तो Cold War is actually not an open war, but yes, a sort of an silent war कह सकते हैं, जो भी कह लो आप, है ना। So that is what she's talking about कि कुछ elements new Cold War के अब आ रहे हैं, block confrontation in our region is there and all. So perhaps she is signaling to जैसा हमको appear हो रहा है, she might be talking about Quad and all, okay, because China has called Quad as Asian NATO or something like that. Clearly नहीं mentioned because she's a diplomat, so she's indirectly writing it and all. So I guess perhaps she's talking about this. हाँ, protectionism मतलब क्या होता है कि actually imposing tariff and all, या not allowing trade much, है ना, with other nation. जैसे when Donald Trump was there, he imposed a lot of taxes on steel imports and all. आपने सुना होगा with China and all. So protectionism मतलब कि हम तुम्हारे यहाँ तुम्हारा बिजनेस या तुम्हारा ट्रेड नहीं रोकेंगे या प्रॉब्लम करेंगे। जैसे X कंट्री Y कंट्री है, X Y को कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो तो मुश्किल हो जाएगा सेल होना। So that is what protectionism is. It is against the idea of free trade, against the free trade idea, है ना। Unilateral sanction in one-sided. यूनिलैटरल मतलब जैसे यूएस ने कहा कि सैंक्शन लगा दो, पुट सैंक्शन ऑन ईरान या रशिया, सो दैट्स यूनिलैटरल सैंक्शन, इन्हें अकेले सैंक्शन लगाना। जनरली सैंक्शन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन इज कंसिडर्ड एज बेटर। अगर यूएन सैंक्शन लगा रहा है रेजोल्यूशन पास करके, जनरली इट इज कंसिडर्ड एज बेटर, बट यूनिलैटरल मींस इफ वन कंट्री इज पुटिंग सैंक्शन, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज हेल्दी इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑल, ठीक है। उसी की बात है। सैंक्शन मतलब होता है एक तरह का यू कैन से इकोनॉमिक बायकॉट, सो वी विल नॉट बी डूइंग ट्रेड एंड ऑल। जैसे अगर इंडिया जैसे यूएस इज सेइंग टू ईरान, it means US will not be doing much trade with Iran. It will not allow other nations to do trade or something like that. ठीक है? Okay, it is imperative for SCO to dance a stronger momentum and all. तो इसी सब की बात हो रही है, ठीक है। अब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. It's nothing to explain much and all. We advocate multilateralism. Multilateralism वही, an organization where multi countries should come together. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया एंड चाइना हैज टू सॉल्व द इशू, दैट्स कॉल्ड एज बायलैटरल, आपस में मिलके दो आदमी। Multilateral means an organization or a grouping where multiple nations come together and solve the problem. So best example UN माना जाता है, उसके अलावा जितना है G7, G20, SCO, these all are examples of multilateralism. Okay, so generally international relation में multilateralism is being promoted and all, and SCO needs more engagement with observer dialogues and all. बस यही सब बात हो रही है कि और भी लोग होने चाहिए, observer states and all, है ना। She is talking about SCO success story and all, ठीक है। over the next 2 decades South Africa and India will preside over BRICS। हाँ, तो अब साउथ अफ्रीका, इस बार तो ब्रिक्स का हेड कौन है, साउथ अफ्रीका है ना। so very likely we'll be having a summit in South Africa. The significant moments to shape a multipolar world order, promote inclusive development and all, ये सब बात हो रही है, ठीक है। okay, which of the following releases World Economic Outlook report? Your options are IMF, World Bank, World Economic Forum, UNESCO। ये भी था साइड में एडिटोरियल में, बताइए।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, बताइए गाइस। एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, 30+ लाइक्स ले जाओ एवरीवन। यस, हाँ, ओनली वन करेक्ट आंसर। अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा हो तो आप आंसर कर दोगे। द राइट आंसर इज ए। देखो जनरली क्या होता है, ये लॉजिक वर्क करती है। मैंने बताया था कि यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक लिखा है तो यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक तो किसी कोई बंदा यहाँ मारते, बट ये वाला सही नहीं है यहाँ पर। दिस लॉजिक इज नॉट वर्किंग हियर। I have told you that in 20-30% cases this logic fails also, but 70-80% केस में it works, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर IMF है, पता होना चाहिए, ठीक है। So and who is the first deputy managing director of IMF? Your options are डेविड मालपास, अजय बांगा, गीता गोपीनाथ, none of the above। ये बताइए तो इसका आंसर। IMF देखो, डेविड मालपास इज एक्स प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ही इज करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड गीता गोपीनाथ इज डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। सी इज द राइट आंसर। ये जोया खान, प्रिया, सानिया अंसारी, बानू, यू ऑल राइट। सी इज द राइट आंसर। हाँ, गीता गोपीनाथ आपको पता होगा बिकॉज शी इज एन इंडियन एंड ऑल, है ना, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। चीफ इकोनॉमिस्ट इज 𝗟𝗏𝗴𝗃। इनका एडिटोरियल में काफी जिक्र है, ठीक है। So 𝗟𝗏𝗴𝗃𝗀𝗃 name is mentioned many times in this editorial. You can read it, है ना। Lopsided growth that bypasses poor nation, risk affecting. Lopsided growth का मतलब एक साइड झुका हुआ, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना एक साइड झुका हुआ, means actually it is talking about inequality. So on one side rich becoming rich and poor becoming poor. गरीब बेचारा और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर। तो lopsided growth अच्छी बात नहीं होती। एक साइड झुका हुआ है पूरा, एक साइड ग्रोथ हो रहा है, एक साइड नहीं हो रहा। It should be actually uniform growth हो तो अच्छा है ना। So everyone should prosper and all, bypassing poor nation affecting global economy। इसी पे बात है, latest report आई है and all। Okay, so just have an idea about it। तो they are saying two large economies US and China have shown slowed down appreciably, है ना। GDP slow down मैंने कहा है, पढ़ाया भी है ना। तो growth of GDP is not very impressing in US and China, especially after COVID and all, है ना। So then the euro area, another key engine of the global economy, is still reeling from Ukraine war, है ना। तो Russia-Ukraine war is happening, it is affecting gas prices and all, ठीक है। इसी सब की बात हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये मैंने बताया था। रशिया टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉपिंग ब्लैक सी ग्रेन डील, ठीक है। आई हैड टोल्ड यू कि एक डील हुआ था लास्ट ईयर वेयर एक्चुअली रशिया हैड अलाउड कि ओके यूक्रेन कैन एक्सपोर्ट इट्स फूड ग्रेन थ्रू बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड ऑल, है ना। आपको पता होगा यूक्रेन इज फेमस फॉर व्हीट एक्सपोर्ट, देन सनफ्लावर के लिए फेमस माना जाता है, और भी इस तरह की चीजें के लिए, आई थिंक ऑयल सीड्स वगैरह के लिए भी यूक्रेन इज वेरी फेमस। सो बट नाउ द रशिया हैज स्टॉप्ड दिस अग्रीमेंट। ओके, नाउ मे बी द यूक्रेन माइट नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट प्रॉपरली बिकॉज मे बी रशिया विल क्रिएट प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दैट मे हैपन एंड ऑल, ठीक है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए एंड ऑल। तो अगर फूड ग्रेन नहीं जाएगा तो हो सकता है और फूड इन्फ्लेशन माइट हैपन, ये भी तो हो सकता है ना, बिकॉज एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो और अदर नेशंस व्हिच आर एक्चुअली इंपोर्टिंग इट, दे विल नॉट गेट दोस फूड ग्रेन्स एंड मे बी द फूड इन्फ्लेशन विल हैपन। एक और इंडिया से रिलेटेड न्यूज था इसी से। IMF encourages India to remove export ban on non बासमती राइस। आपने देखा ये वाला न्यूज? देखो नॉन बासमती राइस क्या होता है, देखो एक्चुअली राइस होता है ना, एक को मतलब जैसे इस तरह इन्होंने कैटेगराइज किया, बासमती राइस एक हुआ, नॉन बासमती राइस ये क्या हुआ, नॉन बासमती राइस। ओके, ना बासमती राइस जो होता है ना ये थोड़ा कॉस्टली माना जाता है एंड इट इज नॉट ईटन एवरी डे। जैसे बिरयानी वगैरह में शायद डाला जाता है, इफ यू आर ईटिंग बिरयानी या थोड़ा अच्छी क्वालिटी का खाना, इफ यू आर ईटिंग समवेयर लेट्स से इन रेस्टोरेंट और लेट्स से इन एनी मैरिज एंड ऑल, तो बासमती राइस यूज करते हैं। बट जो नॉर्मल डे टू डे ईटिंग के लिए नॉन बासमती राइस यूज करते हैं ना, बिकॉज ये कंपैरेटिवली चीपर होता है। ओके, इसका जो है ना एक्सपोर्ट बैन लगा दिया गया, ये वाला पर एक्सपोर्ट बैन, इंडिया हैज इम्पोज्ड एक्सपोर्ट बैन ऑन इट। ये वालों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन ये वालों को भी प्रोहिबिट कर दिया गया। क्यों? a lot of things are there, perhaps एक और रीजन है कि शायद टमाटर वाला हाल नहीं हो जाए कि why to stop actually the price rise in within our own country। ऐसा नहीं हो कि अपने ही कंट्री में डोमेस्टिक सप्लाई गिर जाए, कम हो जाए और उससे महंगाई बढ़ जाए। so that is why export ban has been done। तो लेकिन IMF is not happy with it। in fact IMF is encouraging, requesting India to remove that export ban, कि वो बैन हटा दीजिए।
Otherwise, I mean, the same thing is happening. Food price inflation will happen, and it is saying कि suspension of Ukraine Black Sea green type deal type का similar effect हो जाएगा. मतलब वो बता रहे हैं कि अगर इंडिया का रिस्ट्रिक्शन से वही वाला इफेक्ट हो जाएगा जो यूक्रेन वाला ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को कैंसिल करने से हुआ. So that is what actually they are talking about. Okay, so that is what you should be knowing it. ठीक है. Measuring well-being of India, ये तो कई बार डिस्कशन हो गया है, and we have discussed about Human Development Index. Who releases Human Development Index? UNDP, UNICEF, UNESCO, FAO, Food and Agriculture Organization. बेसिकली इंडिया का मतलब यह है कि किसी भी कंट्री का एक्चुअली जब डेवलपमेंट निकाला जाता है, सो इट्स नॉट ओनली पॉवर्टी बट अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, है ना. हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, ये सभी दिखाता है ना. So who comes up with Human Development Index? Actually UNDP. India का rank, I think if I'm not wrong, 132 अभी latest. Okay, so just have an idea about it. A is the right answer, है ना. Life expectancy, knowledge, decent standard of living, ये सब कुछ देखते हैं. A is the right answer. ठीक है. अब ये मैंने बता दिया. इंडियाज राइज एक्सपोर्ट बैन इम्पैक्ट एशियन अफ्रीकन नेशन. जैसे एक्सपोर्ट बैन कर देंगे तो ये सब जगह महंगा हो जाएगा ना. फूड इन्फ्लेशन विल हैपन बिकॉज दे विल नॉट बी गेटिंग फूड एंड ऑल. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इसी पर न्यूज है. ठीक है. यू जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. So India में Indian NRIs actually started actually hoarding the bags of rice and all. इसी article है. ठीक है. Just have an idea. Okay. Yes. NCW chief meets the victim in the state of Manipur and all. Now there is a question: who is the chairperson of National Commission for Women? Your options are Smriti Irani, Rekha Sharma, Smita Prakash, Nirmala Sitharaman. National Commission for Women की chairperson का नाम बताइए. Anyone? Chairperson of National Commission for Women. Yes, the right answer is Miss Rekha Sharma. B is the right answer. Yes, Zoya Khan, Gauri, you are the right. B is the right answer. It is statutory body made under National Commission for Women. ये अभी न्यूज में एक्चुअली. ये और एक और है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन. ये पूछा था एक्चुअली ALET में 2021 में. Who is the chairman of National Commission for Women? National Human Rights Commission. इसलिए कि उस टाइम पर न्यूज में था. अब National Commission for Women is in the news. Yes, they can ask questions from here. So please go and read about it. They can ask it. ठीक है. 530 district reported as manual free of manual scavenging. इसको manual scavenging कहते हैं. Okay, it has been banned by Supreme Court many times because it is against human dignity and all. Okay, so that is what you should be knowing it. तो इसको बैन करने की कोशिश की जा रही पूरी तरह कि इंसान नहीं जाए नाली के अंदर साफ करने, मशीन से साफ किया जाए. Why should human be going inside the drainage and all? Because this is against human dignity, of course. That is what you should be knowing. UNESCO endorses banning smartphones in schools. तो इसको पढ़ लेना थोड़ा सा. ठीक है. UNESCO को हेडक्वार्टर है पेरिस में. Go and read it कि why it has recommended banning smartphones inside the school and all. So इसको पढ़ लेना. ठीक है. एक ये आर्टिकल है because this is near to our country, so that is why I'm saying कि the Cambodia's prime minister has stepped down after 40 years and now giving his power to his son Hun Manet. ठीक है. Hun Sen has left this and he's his son, so Hun Manet will be the charge and all. So perhaps there is a sort of dictatorship in Cambodia. तो थोड़ा सा आप देख लेना. Here is India, this is Cambodia. ठीक है. So Cambodia के capital वगैरह go and find out. Capital, currency. And one party rule is there. I mean, he's been there for 40 years. 40 साल से ही है. Okay, so go and find out about it. And he is former Khmer Rouge cadre. एक चीज ही पढ़ लेना. इसमें कंबोडिया की हिस्ट्री में है Khmer Rouge. ये पढ़ना कि ये क्या है. Okay, so go and read it. Okay, yes. So this is all about today's class. Marathon session होने वाला है परसों. मतलब 29 को 11 AM में. So do join it. Subscribe to our channel, guys. सबको सब्सक्राइब कर लो. And thank you everyone. Thanks for watching. और सबको like बटन प्रेस कर दो guys. We are seeing only 15 likes. 30 plus likes ले जाओ. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.